There you go. That was a good one. Done. Hi everyone. Welcome to today's video. Today we have a patient who has come from Dibrugarh, Assam. What she has is a neck pain and we will try to ask her as to what the problem is and we'll go from there. आपका अभी गर्दन में जो दर्द है ये कितना साल से चल रहा है? 1-1.5 साल से चल रहा है। 1-1.5 साल से। तो अगर 0 एकदम पेन दर्द है ही नहीं और 10 सबसे ज़्यादा है तो आप कितना नंबर देंगे आपका गर्दन दर्द का? 10 देंगे। अच्छा, तो आपको अगर 10 पेन है तो अभी आप थोड़ा सा गर्दन घुमा के देखिए कितना कहाँ पे दर्द हो रहा है और उधर रुक जाइएगा। ओके, इसके आगे जब जाएंगे तो दर्द हो रहा है इसीलिए। अच्छा ठीक है, तो ये अभी उनका what she has is basically neck spasm more so than a neck pain. We will try to reduce the spasm on the upper trapezius and levator scapulae. This is a great technique to use to relax the muscles because obviously first time patients are apprehensive, थोड़ा सा मतलब ये आता है कि क्या होने वाला है हमको पता नहीं. So this is a great way to introduce when someone has so severe of a pain that she has to come all the way from Assam to Kolkata to get treatment. जो 1.5 साल से उनका गर्दन में दर्द है, अभी किसी भी तरह उनका ट्रीटमेंट से उनका राहत नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए हम थोड़ा सा उनको रिलैक्स करके फिर कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट देंगे. ढीला छोड़िए. वेरी गुड. ढीला. सॉफ्ट. डन. और एक बार. There you go. That was a good one. Wow. That was a good one. Both sides. दोनों तरफ. Relax. Very good. एकदम रिलैक्स. छोड़िए लंबा सांस. और एक बार. बस. Fantastic. All right. थोड़ा सा चिन को टक कीजिए. एकदम बढ़िया. लंबा सांस. और एक बार. डन. स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट ढीला. डन. बस हो गया. वाह, वंडरफुल. पीछे धक्का. और एक बार. डन. छोड़ दीजिए. Wrist joints. Done. She has a little bit of spasm on the trapezius, so what I will try to do is to minimize or inhibit the nerves that's causing spasms of these muscles. Dorsal scapular nerves. So we will try to use the adjuster. Look up. Hitting the scalenes. Going towards the first rib. Doing a little bit of a different technique. Done. Doing another technique. Done. हाथ पीछे रखिए. ऐसा. रिलैक्स. हाथ पकड़ के रखिए. फैंटास्टिक. ऊपर उठेगा. ठीक है. डन. और लास्ट. रिलैक्स. occipital lift. See that? It was a life-changing. It is like a life-changing experience for her. लगा कुछ पूरा खुल गया एकदम.
पहले उनका 10 में से 10 दर्द था और बहुत थोड़ा सा ही घुमा पा रही थी. सो राइट नाउ वी विल डू द सेम एग्जैक्ट टेस्ट एंड वी विल चेक इट आउट. सो अभी थोड़ा सा घुमाइए जितना हो सके, पेन फ्री. फैंटास्टिक. नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन. अभी कितना दर्द है या नहीं? 0 to 10. 0. वंडरफुल, फैंटास्टिक. सो अभी देखिए उनका जो दर्द था अभी है नहीं. एंड प्लीज डू रिमेंबर इट्स अ प्रोसेस. ऐसा नहीं कि मैजिकली होता है. इट्स ऑल बेस्ड ऑन साइंटिफिक एविडेंस. एंड ऑल्सो अ डिस्क्लेमर, जस्ट बिकॉज उनका हुआ बोल के किसी और विद द सेम प्रॉब्लम भी वैसा ही होगा, नहीं भी हो सकता है, 2-3 दिन भी लग सकता है. सो हैव दैट इन योर थॉट प्रोसेस. बट प्लीज डू subscribe, like and share this video. We are at the end of the treatment. She is coming from a long way. She had lot of pain, suffering from 1.5 years, and within one session the treatment with chiropractic adjustment, the pain is gone, and hopefully she'll be able to sustain with corrective exercise program that we will be giving her. And until next time, all the best. Take care. Please don't forget to call us. All the numbers are in the description. Give us a call. We'll be happy to take care of you. Take care. Stay fit. Stay healthy. Jai Hind. Bye.